Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss types of networks. Let's see what is network. A network consists of two or more computers that link in order to share resources such as printers, CD drivers, exchange files, or allow electronic communication. The computers on networks may be linked through cable, telephone line, radio waves, satellites, or infrared beams. That means network is a connection of multiple computers or resources that can be connected through a cables, telephone lines, radio waves, satellites, infrared, Bluetooth, many other connecting mediums. Let's see different types of networks depending upon geographical area covered by networks. It is classified as a LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, wide area network. So what is LAN network? LAN network is used for communication among computer devices, usually within the office building. Basically we are used in LAN inside the office or inside the building. LAN enables sharing resources such as the files, hardware, devices that may needed by multiple users. LAN यूज करते हैं बेसिकली रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए वन प्लेस टू another place inside the organization without using internet or using internet. Is limited in size, typically spanning a few hundred meters and no more than miles. Is fast with speeds from 10 Mbps to 10 Gbps, जो आपका ये मिनिमम टू मैक्सिमम स्पीड है इनसाइड द LAN network. Requires little wiring, typically a single cable connecting to the each device, and has a lower cost as compared to MAN and WAN networks. यहाँ पर this is the cheaper than LAN MAN networks. LAN can either wired or wireless. LAN can be wired network or wireless network. We can use twisted pair cable, coaxial cable or fiber optic cable can be used in wired networks. Every LAN uses protocol set of rules that governs how packets are configured and transmitted. Nodes in LAN link together with certain topology. These topology includes bus topology, ring topology, and star topology. We have discussed in previous lecture in detail these type of topologies. LAN can capable of very high transmission rate, 100 Mbps to Gbps. This is the structure of LAN network. This is the, suppose this is a organization. Inside we have a 5 computers, so we can share the data between them. Some advantages of LAN is speed, cost, security, email and resource sharing. स्पीड भी हमें यहाँ पर फास्ट मिलती है एज कम्पेयर टू LAN, WAN एंड MAN नेटवर्क्स. कॉस्ट भी इफेक्टिव है LAN MAN नेटवर्क से, चीपर है. सिक्योरिटी भी हाई होगी बिकॉज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही शेयरिंग हो रही है. ईमेल ईजिली सेंड कर सकते हैं. रिसोर्स शेयरिंग मीन्स वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ईजिली हम यहाँ पर डेटा को शेयर कर सकते हैं. सम डिसएडवांटेज ऑफ LAN, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल. ये थोड़ा सा इंस्टॉल करने में एक्सपेंसिव है बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल वायर्स की कनेक्शन करना होगा इस सिस्टम पे. फाइल सर्वर में फेल बिकॉज दिस इज द लोकल नेटवर्क, सो फाइल सर्वर में भी फेल हो सकता है आपका. यहाँ पर केबल्स में ब्रेक, अगर केबल्स यहाँ पर ब्रेक हो जाती हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होगा या नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट वन है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क is a large computer network that usually span a city or a large campus. Means metropolitan network आपका within city हम configure करते हैं. A MAN is optimized for larger geographical area than LAN. So यहाँ पर हम
जो मैन नेटवर्क है वो लैन के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा होता है एंड रेंजिंग फ्रॉम सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स टू इंटायर सिटीज़। यहाँ पर सपोज वी हैव ऑर्गेनाइजेशन 2 or 3 विद इन सिटी, so we can make a one metropolitan area network for data sharing. Man network might be owned or operated by single organization, मीन्स आपका मैन एरिया नेटवर्क आपका खुद का भी हो सकता है और या किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। A man often acts as a high speed network to allow sharing regional resources, मीन्स विद इन सिटी डेटा हाई स्पीड में हम सेंड कर सकते हैं। मैन टिपिकली कवर्स एन एरिया बिटवीन 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर्स, मीन्स जो मैन नेटवर्क का लेंथ होगा वो आपका 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बिटवीन होगा। एग्जाम्पल ऑफ मैन टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट प्रोवाइड लाइक टीवी केबल नेटवर्क्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेट्रोपोलिटन नेटवर्क। This is the one organization, suppose this is the another organization. This is connected between the internet using routers. This is the one router, this is the another routers. This is the another example. Suppose this is the education committee and this is connected to MAN, this is connected to WAN, this is connected to other type of networks. This is school 1, school 2, school 3 up to school n. So number of schools are connected to education committee. So this type of network is called metropolitan area network. Next one है आपका wide area network. WAN covers a large geographical area such as a country, continent or even whole of the world. So यहाँ पर wide area network आपका एक world wide network है. So we can share the data anywhere in the world using wide area network. A WAN is a 2 or more LAN connected together. The LAN can be many miles apart. The word most popular WAN is internet, means WAN का जो example है most popular वो internet है। This is the example of WAN network. This is the whole world and this is the example. So multiple computers and devices are connected to each other using internet enabled. Thank you so much.